Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is part 8 of the English translation of the Urdu Bayan Iman Ki Dawat by Hazrat Moulana Ibrahim Dewla Sahab Damad Barakatuhum. This is continuing from the 29-minute 30-second mark of the original video. ईमान वाला अगर अपने ईमान की मौत मरता है तो अल्लाह ताला पूरी दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत हमेशा के लिए देंगे. He's saying that if a believer dies with his iman, then Allah subhanahu wa ta'ala grants him a paradise 10 times greater than this world forever. हमेशा के लिए, 4 रोज के लिए नहीं. It will be forever, not for just a few days, like how this dunya is. हमेशा के लिए देंगे खालिस इसके ईमान की वजह से. He will be granted a paradise forever and ever, everlasting, just simply because of his iman. तो ये ईमान बड़ी नेमत है. So iman is a great nemat. ईमान की मेहनीन, ईमान के तकाजे पर अमल करना, ये तबलीग. Tabligh means to carry out and fulfill the demands of iman. तबलीग. ये तबलीग क्या? कि वह ईमानी जिंदगी बनाना. So what is tabligh? To make our life according to iman, bring our life on iman. अल्लाह से अपना ताल्लुक सही पैदा करना. To correct our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. अल्लाह से ताल्लुक सही पैदा करने का मतलब ये होता है साफ सीधी ज़बान में कि हमारा यकीन अल्लाह की ज़ात पर आवे. Building a connection with Allah subhanahu wa ta'ala, correcting our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala means, in plain words, that our iman and yaqeen come on the zat, the being of Allah subhanahu wa ta'ala. कि हमारा काम बनाने वाला, हमें जिलाने वाला, हमें मौत देने वाला, हमारी हाजतें पूरी कर बन जाएंगे. जब अल्लाह नाराज होंगे हालात बिगड़ जाएंगे. That the one who gives us success is Allah, and also if we meet failure or something behind that, the real doer of that is also Allah subhanahu wa ta'ala. The one who sustains us is Allah subhanahu wa ta'ala. The one who will give us success is Allah subhanahu wa ta'ala. The one who gives us life is Allah subhanahu wa ta'ala. The one who gives us death is Allah subhanahu wa ta'ala. If we disobey Allah ta'ala, then Allah ta'ala will, the bad halat will be created. Bad conditions. ये कायदा है. हाँ, जब अल्लाह नाराज होंगे हालत बिगड़ेंगे. He's saying this is the rule. This is the rule of thumb. That when Allah Ta'ala is displeased, then the conditions of our life become unfavorable. ताजिर होकर, हाकिम होकर, मालदार होकर, जमींदार होकर, सब हो जाओ, लेकिन अल्लाह ऊपर से नाराज है कि हालत बिगड़ेंगे. He said you can be a businessman, you can be what profession, whatever profession you want, and try whatever thing you want. But if Allah subhanahu wa ta'ala is displeased, then the conditions will become unfavorable. जब उन्होंने हमको गुस्सा दिलाया तब हमने उनसे बदला लिया. अल्लाह कह रहे हैं. He's reciting an ayat of the Quran that when they displeased us, then we caught them. इन्होंने हमें नाराज किया, इन्होंने हमें गुस्सा दिलाया, फिर हमने उनसे बदला लिया. They displeased us and we caught them. We took our revenge on them. हाँ, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना जाकर सारी दुनिया की इंसानियत को ये पैगाम दिया कि मन असलह मा बैनहु व बैन अल्लाह असलह अल्लाहु मा बैनहु व बैन खल्क़िही, कि जो लोग अपना और खुदा का मामला सही करेंगे तो अल्लाह उनका और मखलूक का मामला सही कर देंगे. This is why Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam had said that the one who corrects his relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah ta'ala corrects his relationship with everyone else, with the creation. सीधी बात. Clear statement, plain and simple. कितनी आसान बात है. How easy this is. What an easy statement. It's not difficult at all. कि भाई गरीब अपना मामला खुदा से सही कर सकता है, मालदार अपना मामला खुदा. A poor person can correct his relationship with Allah Ta'ala. A rich, wealthy person can also correct his relationship with Allah Ta'ala. It's available for everyone. सही कर सकता है. और खुदा से मामला सही करने का क्या मतलब है
कि अल्लाह को एक मानकर, अपना काम बनाने वाला मानकर अपने आप को खुदा का बंदा बनाओ. And what does it mean to correct one's relationship with Allah? That it means that keeping the oneness of Allah Ta'ala, and having the yaqeen in Allah Ta'ala, then bring oneself onto the servitude of Allah Ta'ala, bring oneself to be a servant of Allah Ta'ala. अपनी आजादी खत्म करो. Leave behind one's own free will, like I'm free to do this, I'm free to do that. Leave that behind and bring oneself under the rule of Allah Ta'ala, the command of Allah Ta'ala. क्या खत्म करो? आजाद हो गए जान माल खर्च करने में, जहाँ चाहें खर्च करें, जो चाहें करें, कैसा नहीं? It is not such that the servant of Allah is now free to spend his money however he wants, accumulate money however he wants, do whatever he wants. This is not so. Obviously, someone who is a servant of Allah Ta'ala, he is bound by the commandments of Allah Ta'ala. पाबंदी अपने अंदर पाबंदी लाओ. Bring that restriction that Allah Ta'ala has put, bring oneself onto those commandments and that restriction. किसी की पाबंदी लाओ कि हुक्मों की पाबंदी लाओ. यकीन सही बने, अमल सही बने. We should strive that our yaqeen becomes correct, our certainty becomes correct, and following certainty, the next step is then our amal becomes correct. ये अल्लाह से ताल्लुक सही करने का रास्ता है. Correcting one's yaqeen, correcting one's amal, this is the way and the path to correcting one's relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. ईमान यकीन सही बने. Iman and yaqeen should become correct. और अमल सही बने. And amal, ये अल्लाह से ताल्लुक सही करने की बात हो गई कि आदमी ने अपना ईमान सही बनाया, अपना अमल सही बनाया. अमल सही बनाने का मतलब ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अपनी जान माल इस्तेमाल करे. ये अमल. Correcting one's amal means to follow the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as far as one's being and one's wealth. सही हुआ. जमाने के माहौल, जमाने के रिवाज के हिसाब से नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से अपनी जान माल का इस्तेमाल. Correcting one's amal means to follow in the footsteps of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam with regards to one's being and one's wealth, and not following the trends of the time and what the people are doing. कि ये मामला सही हुआ तो हक़ ताला शानहू क्या देंगे? So in return of this, if we do this, then what will we get in return? What will Allah subhanahu wa ta'ala give us in return? तो फरमाया मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयन्नहु हयातन तय्यबा. कि जो ईमान बनाकर, अमल बनाकर, इखलास के साथ जिंदगी गुजारे. तो the one who corrects his iman and ikhlas and lives his life as such, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला दुनिया में जीने के लिए साफ सुथरी जिंदगी देंगे. the one who corrects his iman, his amal and his ikhlas and lives as such, then Allah Ta'ala will give him a pure life. इनकी जिंदगी कैसी होगी? साफ सुथरी, साफ. इनके दिलों में गलत यकीन नहीं होगा. In their lives they will not have any sort of wrong belief. इनके अंदर गलत जज्बे नहीं होंगे. They will not have the wrong aspirations in इनके them. अंदर आपस में उल्फतें और मोहब्बतें होगी. But between them they will have love and understanding and compassion. इनके दिलों में चैन होगा. In their hearts they will have peace and contentment. इनके असबाब में बरकत होगी. In their means they will have a lot of barakat. In the means, he means like financially, in their health, in their wealth, Allah Ta'ala will place barakah. इनकी दुआओं में कबूलियत होगी. Their du'as will be accepted. ये सारे इनामात पाक साफ जिंदगी के हैं जो अल्लाह ताला देने वाले हैं ईमान अमल पर. So all these things Allah Ta'ala will give them if their iman and amal is correct. अगर अल्लाह नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा. If Allah will not give, then we will not get it from anywhere. इसका यकीन करें. Believe me, believe this, and have the belief in this, that if Allah Ta'ala does not give this, we cannot get this from anywhere else. The only place to get this from is from Allah Ta'ala. कि हमें दुनिया के असबाब हमारा काम नहीं बना रहे हैं. He's saying, believe me that the worldly means are not
the worldly means do not have the power to do anything for us. हमारा काम कौन बना रहा है? अल्लाह बना रहे हैं. But he's saying that it is Allah who makes us. It is Allah who makes things work out for us, not the worldly means. असबाब तो मेरे दोस्तों कुदरत को जाहिर करते हैं. Asbab, he's saying, asbab, they manifest the qudrat of Allah Ta'ala. That's their role.